Good morning, everyone. I am Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management in Applied Science Department. I am teaching you probability and statistics course. Today's topic: sampling distribution of a statistics. Okay. Now, sampling distribution of a statistic. Consider a population of size n and R is a sample. R samples are drawn using random samples. Means population size कितना है? N है. How many samples are drawn? R samples are drawn using random samples. Okay. Case 1. Standard error of the difference between sample mean and population mean. Let the sample mean x bar, since xi are independent normal variate with mean mu I and variance sigma I square. We have sigma ci xi is also a normal variate with mean mu equals to sigma ci mu I. Sigma square equals to, as we know that mean का formula क्या होता है? Sigma ci into mu I. Understood? Where ci is the sample size of x1 variate, c1 is the sample size of x1 variate, c2 is the sample size of x2 variate. That means ci is the sample size of xi variate, and mu1, mu2, mu3, mu I are its mean, and sigma is its variance. Understood? Then sigma square is equals to sigma ci square into ci square, sigma ci square into sigma I square. Understood? Then ci is taken, ci is equals to 1 upon n, and mu I is equals to, if I have taken ci is equals to 1 upon n and mu I is equals to mu, then sigma is equals to sigma. Means all the samples are same size, and its mean are same and its variance are equal. Then sigma ci xi is equals to 1 upon sigma xi, which is, it's a population mean, that this is denoted by x bar. Understood? Then this can be written as sigma ci mu I, and mu I is a mean of samples and ci is the size of sample. Then put the value of ci की वैल्यू क्या है? 1 upon n put करेंगे तो n 1 upon n outside the sigma sign, because it's a constant. तो 1 upon n बाहर आ गया, sigma ui, and if u1, u2, u3, u4 all are same, then if I added n times, then n mu is equals to n and cancel out, then value will be mu. If sample size are same, if x is a population and each sample size are same for every variate x1, x2, x3, x4, and its mean are same, and then its population mean is equals to sample mean. Understood? Now another one, if sigma ci square into sigma I square, this sigma is a variance. Okay, then put the value ci is equals to 1 upon n. So 1 upon n square is equals to sigma 1 square, sigma 2 square, sigma n square. If I'm saying sigma I is equals to sigma square, means if I saying sigma I is equals to sigma, that means all variance are standard deviations are same. If all standard deviations are same, then its variance is also same. Then put the value sigma 1 square is equal to sigma 2 square is equal to sigma 3 square, all are same. तो sigma square, sigma square, sigma square n times ऐड करेंगे तो क्या आएगा? n sigma square. तो n से n square cancel out, then value is equal to sigma square n, sigma square upon n. X bar is a mean of n independent normal variate. Understood? With the same mean mu and variance is equals to sigma square, then x is normal variate, x is normally distributed with mean mu and variance is equal to sigma square upon n. Hence standard error is sigma upon root n. What is the standard error in? Sigma upon root n. Case 2. If standard error of difference between means of two samples, if I am having a population and we draw two samples of size n1 and n2 with two size of random samples drawn from a given population, means if there is a population x and we draw two samples of sample size n1 and n2,
then let x1 bar x2 bar be respectively means of sample with same mean mu. ओके, मींस x1 बार एक सैंपल था, उसका साइज कितना है n1, x2 बार एक सैंपल था, उसका साइज कितना है n2, और उसके जो मीन्स हैं both are same, that is mu, and variate are sigma 1 square and sigma 2 square. Then x1 is normally distributed mu and sigma 1 square upon n1, and x2 bar is normally distributed with mean mu and sigma t square upon n2. Then therefore mean x1 minus x2 bar is also normal, means x1 is a normal distribution, x2 bar is a normal distribution, then x1 minus x2 bar is a normal distribution. As we know the property of expectation, अरे हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी ना, आई थिंक यूनिट वन में हम प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, दैट इज प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ ax1 प्लस bx2 क्या कर था, दैट इज a into expectation of x1 प्लस b into expectation of x2, करी थी हमने प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी दैट यूजिंग दैट प्रॉपर्टी मींस x1 minus x2, तो उसमें क्या होता था, expectation of x1 minus expectation of x2, because we know that expectation and mean are same thing. Then mean क्या होता है, x1 का mean क्या है, that is mu, और x2 का mean क्या है, mu, तो mu minus mu is equals to 0. Then expectation of x1 minus x2 is bar is equals to 0, means expectation is a mean, then mean क्या होगा x1 minus x2 bar का, वो क्या होगा 0. Now we find the proper variance of x1 minus x2, because we know that variance का property क्या होता है, if a x1 plus b y2, a x1 plus b x2 something like that, अगर उसका हमें variance निकालना तो क्या होता है, a square plus b square, sorry a square v of x1 plus b square v of x2 plus sorry हाँ a square, if x1 x2 are independent तो हम क्या करेंगे, a square v of x1 प्लस b स्क्वायर v of x2, हमने वैल्यू पुट कर दी, तो v of x1 की वैल्यू क्या, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस v of x2 की वैल्यू क्या, सिग्मा 2 अपॉन n2, दिस इज n2. ओके, तो हम यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन होगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता ना, तो -1 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, +1, ये हो जाएगा. तो x1 minus x2 बार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 and plus sigma 2 square upon n2, and standard error there is sigma 1 square upon n1 upon sigma 2 square upon n2 का ओवररूट. अंडरस्टूड है, मींस अगर आपको दो if samples are drawn between two, मींस स्टैंडर्ड एरर निकालना between means of two sample, मींस अगर आपको टू एक पॉपुलेशन गिवन है, उस पॉपुलेशन से आप टू सैंपल्स ड्रा करते हो randomly, that is x1 and x2, and its size are n1 and n2, and means are same, then what is the error on that one? तो error क्या होगा आपका, that is आप expectation निकालोगे तो expectation of x1 and expectation of x2, तो expectation of x1 minus x2 निकालोगे, तो expectation of x1 minus x2 को फॉर्मूला होता है, that is expectation of x1 minus expectation of x2, because हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन पे कि दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 minus x2 or x plus y is equal to expectation of x plus y, expectation of x minus y is equal to expectation of x minus expectation of y. हमने थर्ड प्रॉपर्टी लगा दी, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 minus x2, तो expectation of x1 minus expectation of x2, mu minus mu is equal to 0. सेम एज वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या थी, वेरिएंस ऑफ, हम निकालते हैं जब वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस सॉरी x प्लस y का क्या निकालते हैं, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y. अगर वेरिएंस ऑफ x माइनस y निकालते तो हम क्या करते थे, एक फॉर्मूला होता था वेरिएंस ऑफ ax प्लस by, उसमें क्या कहते थे, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y. अगर मैंने ऐसा कर दिया तो a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर +1, ये हो जाएगा, समझ आ गया. स्टैंडर्ड एरर क्या होगी, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2. नाउ वी विल शिफ्ट ऑन अनदर केस, दैट इज केस थर्ड. स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल
sample standard deviation and population standard deviation. Okay, so let S denote the sample standard deviation. How can you find the standard deviation? अगर आपके variance है तो variance का जब root ले लोगे that will call standard deviation. हम इसको sometimes short form में STD बोलते हैं. STD that means standard deviation. क्या बोलते हैं इसको? STD. अगर let S be a S denote the standard deviation of a sample size n drawn from a population with standard deviation sigma, means sample का standard deviation क्या है? S, size n का हमने एक sample draw करा from a population of standard deviation, means population का standard deviation क्या है? Sigma. Sample का क्या है? S, population का क्या है? Sigma. Standard deviation है. Then S is a normally distributed with sigma square upon 2n. तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा? सिग्मा अपॉन रूट 2n. 4. Standard error of a difference between standard deviation of two samples means, तो स्टैंडर्ड एरर निकालनी है. ठीक है, अगर मैंने दो सैंपल्स ड्रा करे, लेट S1 S2 denote the standard deviation of two samples of size n1 and n2 drawn from a population with deviation from two populations with deviation sigma 1 and sigma 2. तो S1 सैंपल का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन mu1 and sigma 1 square upon 2n1, and S2 is normally distributed mu2 sigma 2 square upon 2n2. Understood? Then हमें क्या निकालना होगा? S1 minus S2. अगर S1 minus S2 फाइंड करेंगे, that is S1 minus S2 is normally distributed with mu1 minus mu2, means मीन तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. प्रीवियस वाले केस में जैसे आपने इसमें किया था, अरे जिसमें सेम था तो इसमें एक्सपेक्टेशन निकाली x1 minus x2. अगर यहाँ पे mu1 minus mu2 कर देंगे तो ये mu1 और minus mu2 हो जाएगा, तो mu1 minus mu2 आ जाएगा. सेकंड, अगर मैंने यहाँ पे सिग्मा S1 is normally distributed with मीन कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2n1. तो उसका जब वेरिएंस निकालेंगे तो क्या होगा? वेरिएंस ऑफ x1 minus S1 minus S2 क्या होगा? वेरिएंस ऑफ S1 प्लस वेरिएंस ऑफ S2 सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2n2. जब करोगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2n2. मींस आपको निकालना है, इसमें आपको अपने आप ही करना है. मींस आपको ये निकालना होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ S1 minus S2 जो कि मीन हो जाएगा आपका S1 minus S2 का, और वेरिएंस निकालोगे S1 minus S2 का, तो वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस ऑफ S1 minus S2 का क्या होगा? वेरिएंस ऑफ S1 प्लस वेरिएंस ऑफ S2, और वेरिएंस ऑफ S1 क्या होता है? सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2n1, जस्ट 2n2 जैसे मैंने इस केस में निकाला था. आपका वेरिएंस ऑफ x1 minus x2 के केस में आपको x1 की जगह s1 पुट कर देना और x2 की जगह s2. आप इसको होमवर्क में कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट वन, जस्ट अ मिनट. Okay, now another topic, that is test statistics. In a large sample theory, for a large sample, if T is any statistics, then it follows a normal distribution. It follows a normal distribution in a large sample theory. For a if T is any statics, then it follows a normal distribution. Normal distribution, population mean with population mean mu. This can be also so the expectation of T, and standard deviation is equal to SE of T. That means sample expectation, sample mean, or you can say that standard deviation. Okay, तो हम इसको सैंपल में पॉपुलेशन मीन को E of T से डिनोट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन को SE of T. समटाइम्स जो मीन जो स्टैटिस्टिक्स होगा दैट इज डिनोटेड बाय Z. तो Z इक्वल टू T, Z इक्वल्स टू T माइनस E of T अपॉन रूट V of T. Understood? Root V of T is normally distributed with mean 0
root v of t is normally distributed with mean 0 and variance t, 0 and 1. तो रूट v of t को क्या डिनोट करेंगे? दैट इज SE of t. केस 1, test for difference between sample mean and population mean. If population standard deviation is not known, means population का standard deviation पता नहीं आपको, ठीक? We approximate sigma is approximate to S. S is a standard deviation of a sample. STD means standard, ST means standard or default deviation, standard deviation of sample. तो Z is equals to क्या हो जाएगा? Z is equals to x bar minus mu upon sigma upon root L. This is most important formula. Okay, at Z equals to, this is a test, Z equal to x bar minus mu upon sigma upon root n. In next class we will discuss the questions of these all, means in all the formulas, means सारे formula पे हम questions discuss करेंगे next class में. Okay, now case 2, difference between means. If sigma 1 is square, there are 3 cases. If sigma 1 is square is equals to sigma t square is equals to sigma square, that is samples are drawn from the population with same standard deviation. If the standard deviations are same, then variance is also same. Variance is also same. Then Z is normally distributed. Z is equals to x1 bar minus x2 bar upon sigma root 1 upon n1 plus 1 upon n2 is normally distributed with mean 0 and 1. Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? x1 bar minus x2 bar means difference between mean. Understood? If two samples are drawn from population with same standard deviation, x1 bar is just mean of sample S1 and x2 bar is a mean of sample S2, and if standard deviations are same, then sigma is common, 1 upon n1. This is n1 is a size of sample S1 and n2 is a size of sample S2. Then total population, अगर मेरे पास 2 samples drawn है, S1 और S2, उसके मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो हम पूरी उन दोनों सैंपल्स को मिलाकर के जो पॉपुलेशन बनेगा उसका मीन और उसका जो स्टैटिस्टिक्स होगा, उसके लिए उसका स्टैटिस्टिक्स कैसा होगा? Z इक्वल टू x1 माइनस x2 बार, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन सिग्मा रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2. Second one, if sigma is not known, in some cases mean is known and sigma is not known and samples are large, means n1 n2 are large values, then sigma square means sigma square of that population जो दो सैंपल को मिलाकर के बनी हुई है. जैसे अगर आपका S1 और S2 एक सैंपल है, ठीक, उन दोनों को मिलाकर के जो एक पॉपुलेशन बनाएंगे, ठीक है, एंड साइज ऑफ सैंपल्स आर सो लार्ज, मींस n1 की वैल्यू बड़ी है और n2 की वैल्यू भी बड़ी है, तो जो उन दोनों को मिलाकर के पॉपुलेशन बना है उस पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या होगा? दैट इज n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर. अंडरस्टूड? क्या होगा? n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 प्लस n2. क्या होगा सर? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, वेयर s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर आर वेरिएंस ऑफ द सैंपल. क्या होगा सर? s1 s2 क्या होगा? वेरिएंस किसके होंगे? सैंपल्स के. तो हमारे जो पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या होगा? n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2. अंडरस्टूड? इफ sigma 1 square does not equals to sigma 2 square, and in previous case, second case में क्या है? Sample size are so large, means sigma is not known but sample size are large. अगर sample size large है तब भी होगा. अगर sample size large के बारे में given नहीं, कुछ भी नहीं given है, तो sigma 1 square does not equal to sigma 2 square. Then sigma 1 square and sigma 2 square are not known, means sample के पता नहीं है. That means statistics कैसा होगा उसका? Z is equals to x1 bar minus x2 bar upon root s1 square upon n1 plus s2 square upon n2. That means अगर 2 सैंपल्स रन करे गए हैं, मान लो S1 है, एक सैंपल मान लेते हैं X1
दूसरा सैंपल मान लेते हैं x2 एक पॉपुलेशन से, उसके आपको मीन आपको गिवन है x1 बार, दूसरे का मीन क्या गिना है x2 बार। अगर मुझे उसका एक पॉपुलेशन बनाया, दैट मींस दोनों को मिला दिया, तो दोनों को मिलाएंगे तो उसका स्टैटिस्टिक्स कैसा होगा, z इक्वल्स टू उसके डिफरेंस लेंगे मीन का अपॉन रूट s मींस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, दैट इज रूट s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस रूट s2 स्क्वायर अपॉन n2। मींस अगर वेरिएंस निकालना है तो अगर एक का मीन s1 है, वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 कैसे निकालोगे, आपने निकाला था s1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, तो यहाँ पर रख दिया। यहाँ पे नीचे क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसलिए रूट आ गया। अंडरस्टूड है? ओके, नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन, और दूसरा क्या है, स्टैटिस्टिक्स। अंडरस्टूड है? अगर मैंने कहा फर्स्ट क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन s एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, डिनोटेड बाय s, एंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। ठीक, तो मीन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ मीन, तो क्या होगा, z इक्वल टू s माइनस सिग्मा अपॉन रूट n। ये क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। मींस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जब होगा तब उसका स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, z इक्वल्स टू s माइनस सिग्मा अपॉन रूट 2n। ओके, अनदर वन, sample standard deviation s1 s2 means difference between sample standard deviation s1 and s2। इसको आपने निकाला था s1 माइनस s2, अरे x1 बार माइनस x2 बार, तो उसका मीन था x1 बार। यहाँ पे क्या होगा, s1 माइनस s2 अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2n2। remember all these formula, these are most important formula because these are used in your questions। okay, first, second and fourth, this is most important। okay, आपके एग्जाम में भी आते हैं ऐसे फॉर्मूले, इससे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे होंगे इसके। अंडरस्टूड है? ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्या होगा अगर डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन s1 s2 के बीच के डिफरेंस निकालेंगे, तो s1 माइनस s2 अपॉन रूट ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2n2। सैंपल प्रोपोर्शन, अगर एक सैंपल प्रोपोर्शन p है एंड अनदर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन p कैपिटल P है, तो क्या होगा, मीन डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शन p एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल P, that is p minus p upon root pq upon n, and n is the size of sample and q बाद में यूज होगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, two sample proportion p1 p2, if there are difference between two sample proportion p1 and p2, then p1 minus p2 upon root over p1 q1 upon n1 plus p2 q2 upon n2। understood? okay, thank you so much।